तो गाइज़ हमें यहाँ पे काफ़ी स्लो शेडिंग करना है, एकदम स्मूथ शेडिंग करना है हमें, ताकि बिल्कुल लाइटली और परफेक्टली शेडिंग हो सके। तो गाइज़ पहले हम डार्क लाइंस बना लेंगे और उनके बगल में जो डार्क शेडिंग दिख रहे हैं उन्हें भी कर लेंगे। और टी शर्ट बनाने के लिए गाइज़ सबसे पहले हम डार्क जो लाइंस होते हैं, जो कपड़े मुड़े हुए होते हैं, पहले हम उन्हें ड्रॉ करेंगे और फिर हल्के हाथों से उन्हें शेडिंग करेंगे।